Hi, good afternoon, everyone. Welcome to yet another interesting conversation and the session on in the theme of youth partnerships for sustainable development. Today, we have some youth here with us to talk about starting young, youth taking charge of climate change. So, I would like to welcome our moderator, Abhiir Bhalla. And I would like to tell you that he is an active youth environmentalist at a global level. Abhiir has been working in the field of conservation for over 11 years. He has been identified by BBC World News as amongst foremost youth environmentalists in 2020. He and his work has been featured prominently in the national and international media. As a sustainability consultant and policy advocate, his work focuses on climate change, which is a particular focus on with a particular focus on air pollution and waste segregation. He is the producer of the successful climate change podcast, Candid Climate Conversations, for a UK based think tank. A prominent youth leader, Abhiir is passionate about driving youth climate action. He's been there. He's been a three-time TEDx speaker and advises board of Commonwealth Human Ecology Council. Driven by the motivation to work for the betterment of India, Abhi's long-term career aspiration is to serve the country as the Prime Minister of India someday. In the short term, he's keen to pursue a career in sustainability, public policy, and diplomacy. Having graduated from Ashoka University recently, he has recently joined the chairman's office at PwC India, working on impact projects and public policy and sustainability. He continues to be an advocate for sustainability, having carried out about 250 plus workshops and speaking engagement at various forums. I would like to now welcome Abhiir to take over the stage, and the stage is all yours, Abhiir. Thank you, Sonali. So we were meant to have a couple of more panelists, but I'm very glad and honored to have Varsha here with me. I will quickly introduce Varsha, and then I think we can dive right in. And I'm hoping, fingers crossed, that the rest of our panelists can join in very soon as well. So Varsha was, as a young girl growing up in Bundelkhand, Varsha witnessed the effects of climate change on her local environment. She began working in the field of water conservation at a very early age, and with time she became more passionate about combating climate change. Later, when she started working at Radio Bundelkhand, a flagship community intervention by Development Alternatives, she realized that she could harness her role as a radio jockey to reach out to numerous individuals severely affected by climate change. She aspired to become the voice advocating for climate change in the Bundelkhand region, and if I may say so, I think she's done a phenomenal job at doing exactly that. So thank you, Varsha. आप हमें join कर पाए. I'm very glad that you were able to join us, and hoping that हमारे बाकी panelists भी अभी जल्द ही join in कर लेंगे. So Varsha, मैं start करना चाहूँगा. I think Sarah is also joining in now. So, while Sarah is joining in, actually, let me quickly introduce Sarah as well. If the organizers could give her access, I think she is in the audience. Sarah is a 20-year-old youth leader and eco-influencer who is working diligently as a change maker, not just in Uttar Pradesh, but also across the world. As an eco-influencer, Sarah uses her platform effectively to endorse those brands and products which are eco-friendly and have a low carbon footprint. She also endorses eco events and leverages Instagram reels and graphics to promote her eco actions. She is leading a team of 800 plus ground volunteers in more than 20 cities of UP, and they work twice a week as change makers in their respective cities in the area of climate change, education, and social welfare. It's lovely to have us. It's lovely to have you with us, Sarah. वर्षा, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा. पहले तो आई थिंक सबसे बेसिक सवाल, क्या प्लीज़ हम सबको अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? आपने ये
काम पर्यावरण पे कैसे शुरू किया, कब शुरू किया, इन योर जर्नी कौन सी अपॉर्चुनिटीज थी, कौन सी चैलेंजेस थे और आपने उन्हें ओवरकम कैसे किया? सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि आपने बताया कि मैं बुंदेलखंड से हूँ और मैंने शुरुआत की थी क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करने की, तो वो मैंने अपने घर से ही शुरुआत की थी। जैसे घर में माहौल जैसा होता है, बच्चे भी वैसे ही देख-देख कर बड़े होते हैं, तो मैंने देखा कि किस तरह से मेरी मम्मी जो है वो किचन का बचा हुआ पानी जो है उन्होंने किचन गार्डन घर में लगा के रखा था अपने घर के एक छोटे से आँगन में, तो वो उसमें पानी डालती थी जो बचा हुआ पानी होता है। तो मुझे लगता था कि ये आखिर ऐसा क्यों होता है, तो उनसे कुछ-कुछ चीज़ें मुझे पता चलती गई, फिर मैं उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। वो मुझे भी बोला करती थी कि बेटा इन पेड़ों को पानी तुम्हें देना है या ये पानी तुम्हें बर्बाद नहीं करना है, इसको बचा के रखना है क्योंकि गर्मियों के दिनों में बुंदेलखंड में बहुत सूखा होती है और सूखा की वजह से हमें पानी के लिए लाइन लगा के खड़ा होना पड़ता था। तब रियलाइज़ हुआ धीरे-धीरे, उस टाइम मेरी एज जो है वो 16 से 17 साल की एज ही होगी जब मैंने शुरुआत करी थी, देखा। फिर धीरे-धीरे चीज़ें जब समझ में आने लगी और अच्छी बात मेरे साथ ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली से तो कनेक्टेड थी, लेकिन क्लाइमेट से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं थी। लेकिन उसी टाइम पे मुझे रेडियो के बारे में पता चला कि आपके आस-पास एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पर जाकर आप एक साथ कई लोगों से बात कर सकते हैं, साथ में अपनी जानकारी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि आखिर ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है और कैसे हम उसको देख सकते हैं और कैसे निकलने के लिए या उससे बचने के लिए या फिर हम उसको ठीक रखने के लिए क्या और छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो अपनी जगह पर स्थानीय तौर पर हम कर सकते हैं। तो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी। रेडियो बुंदेलखंड में जॉइन करने के बाद, क्योंकि हमारी जो संस्था है डेवलपमेंट ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे ऐसे काम करती है, लाइक जैसे तालाबों का जीर्णोद्धार करना, उन्हें दोबारा से पुनर्जीवित करने का काम, गांव-गांव में बाड़ी स्थापित करवाना, लोगों को पेड़ देकर उन्हें मोटिवेट करना कि आप इनको लगाइए, इनकी देखभाल करिए। तो इस तरह के बहुत सारे काम, चेक डैम बनवाना गाँव में, वो चीज़ों को देखकर भी काफ़ी हद तक आप प्रभावित होते हैं कि आपके आसपास चीज़ें क्या हो रही हैं। तो उनसे कनेक्टिविटी जैसे ही बढ़ती गई, तो मेरी जो अपने अंदर की इच्छाएँ हैं वो बढ़ती गई कि मैं इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जानूँ, प्लस इसको और कैसे संरक्षित कर सकते हैं हम, अपने जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको लेकर पर्यावरण को संरक्षित हमें कैसे करना है। ये थी मेरी छोटी-सी जर्नी। थैंक यू वर्षा। छोटी तो नहीं है और बहुत इंस्पिरेशनल ज़रूर है। Glad to see that you can join, Sarah. Why don't you? We are very short on time. We unfortunately just have another 15 minutes. Over to you, Sarah. So it all started when my 16-year-old virgin realized that something unusual was happening around me. Summers were hotter than usual, and winters were filled with smog. At a time when I heard that the glaciers were melting faster, I felt like my ice cream was melting even faster, which was not a good sign indeed. And at one fine day, when I was traveling to some place, I saw a kid running down the lane in a scorching heat with barely some clothes on his body, where I realized that something is unusual, which is happening around me, which affected me a lot. And that's where my story begins. I started from the scratch and went through my school books to study more about this issue. Uh, and I believe that just like most of the people, even I skipped those last environment chapters of my science textbooks. And that is why I had no clue about the issue, why I had that actual climate anxiety inside me. And with that, I understood that people around me do not feel the urgency of taking climate action. And so I made up my mind to step on ground, and that's where I started working with several initiatives, mobilized youths, and created an impact on over 30,000 plus students and youths across the nation who are from different cities, states, who are from different walks of life, but are working for just a cause, and that is for saving the planet. I think that's it. Thank you so much. Thanks, Sarah. Great. So, सारा और वर्षा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके मुताबिक व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज, जो हम क्लाइमेट एडवोकेसी और एक्टिविज्म की बात करते हैं,
राइट, उसके जब हम उसके बारे में बात करते हैं, अगर सोचा जाए तो एक तरह से क्लाइमेट चेंज पर काम करना एक बहुत ही थैंकलेस जॉब है, राइट। अगर आप मैं अपनी बात करूं तो मैंने देखा है इन द लास्ट 10-12 years that I've been working as an environmentalist, हर 2-3 साल में इफ नॉट सूनर मुझे ऐसे लगता है कि इज इट वर्थ इट, क्या मैं सही चीज कर रहा हूँ, इस सब करने से कुछ कोई कोई प्रोडक्टिव आउटकम होगा भी या नहीं होगा, राइट। बट आई हैव फाउंड कि मेरे लिए एटलीस्ट the source of motivation has been the fact that one, of course, हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे, of course, if there are eight negative things about climate change, there are 2 or 3 positive things that are coming out about climate change, right? We saw that Delhi had the cleanest air in 8 years this April, which was unprecedented, right? So there's always a glimmer of hope somewhere. But and similarly, I found that it's through platforms such as this where you can actually spread your thoughts and influence others, and you get recognition for the work that you do, that you actually are motivated to continue to do your work. Because as I said, climate change पे काम करने के लिए काफी लोगों को अभी तक पैसे नहीं मिलते. There's no sort of it's very thankless, right? So मेरा सवाल आपसे ये है कि how do you deal with this? Right, do you think कि आपके लिए क्या सोल्यूशन है या क्या मोटिवेटिंग फैक्टर है कि आप इतने 4-5 या उससे ज्यादा सालों से इस पे काम कर रहे हैं? वर्षा, व्हाई डोंट वी स्टार्ट विद यू? देखिए, बहुत सही बात आपने कही है, क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें लगता है कि भाई इससे 2 पैसे या थोड़ा-सा बेनिफिट हमें भी मिलना चाहिए, तब हम वो काम करेंगे, हम क्यों करेंगे? और एज़ अ यूथ मुझे लगता है कि आज की जनरेशन भी यही सोचती है कि आपको कुछ अर्निंग अगर नहीं हो रही तो हम कोई काम क्यों करेंगे? लेकिन आप ये सोचिए ना, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, अगर वहाँ पे आपको साँसें मतलब लेने में ही तकलीफ हो, आप जी ही नहीं पाएँगे, तो फिर आप कैसे काम कर पाएँगे? तो हमारे साथ थोड़ा-सा अलग ये था कि रेडियो बुंदेलखंड 2008 से स्टार्ट किया था। उस टाइम हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करना शुरू किया था। एक छोटे-छोटे से प्रोग्राम बनाने शुरू किए थे। गाँव में लोगों को समझाते थे, तो उन्हें लगता था कि भाई हम क्यों आपकी बात सुनें, क्योंकि हमने तो क्लाइमेट खराब नहीं किया है, हमने तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, तो हम आपकी बात सुनें क्यों और मानें क्यों? तो प्रॉब्लम आती थी, और आपके पास जब कुछ बजट नहीं होता है तो आप ग्राउंड लेवल पर भी वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो आप एक्चुअली में समुदाय के लिए करना चाहते हैं। तो 2009 की बात है, शायद मुझे याद है, उस टाइम पे ब्रॉड बैंक ने हमें फंड किया था शुभकल प्रोग्राम के लिए, कौन बनेगा क्लाइमेट चेंज का लीडर। तो उसके लिए हमने एक कंपटीशन टाइप का रखा कि क्यों ना हम इसको एक कंपटीशन बना देते हैं, जिसमें लोगों को कुछ ये लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये कंपटीशन है। तो वो कंपटीशन के द्वारा हमने 150 गांव को रीच किया, और उन 150 गांव के युवाओं को चुना, किसानों को चुना, हर एज के लोगों को हमने चुना, ताकि हर तरह से लोग हमारे पास जुड़ते जाएं, हमें उनके अनुभव भी मिले, और साथ में जो हम उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन पे दिन प्रकृति इतनी खराब हो रही है या पर्यावरण बदल रहा है, तो उसका कारण क्या है। तो इस तरह से लोगों को जोड़ना हम लोगों ने शुरू किया। अब देखिए, चैलेंज तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हैं जहाँ पर लोग सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। तो चैलेंज बहुत सारे आए, लेकिन क्योंकि जब लोगों को पता चला कि कंपटीशन है और इसमें कुछ प्राइज़ मिलेगा, प्राइज़ ना मिलेगा, लेकिन जो खेलने के टाइम हमें चीज़ें दी जा रही हैं, लाइक जैसे हम उन्हें फ्री में पेड़ दे रहे हैं, हम उन्हें फ्री में कंपोस्टिंग की चीज़ें दे रहे हैं, हम उन्हें और भी सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, और प्लस रेडियो पर कुछ शो भी ऐसे बना रहे थे कि आपको सुनकर उनका आंसर करना है, और जो अच्छा आंसर देगा हम उसको एक छोटा-सा प्राइज़ भी आपके गाँव में जाकर देकर आएँगे, प्लस आपकी स्टोरी भी लिखेंगे और आपकी स्टोरी को हाइलाइट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक जोड़ने का तरीका था कि आप अपने समुदाय को क्लाइमेट जैसे इश्यू के साथ किस तरह से जोड़ सकते हैं। बढ़िया, थैंक यू वर्षा। आई थिंक आपने बहुत सही तरह से समझाया कि हम कैसे लोगों को इंसेंटिवाइज कर सकते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचने के लिए और उस पर काम करने के लिए।
Sarah, what are your thoughts on this? Very quickly. So, yes, I think staying motivated is crucial for long term impact. And all I can say is we have to be optimistic and keep educating ourselves about the science, about the impacts, about the solutions related to climate change. Connect with like minded individuals, where we can surround ourselves with a community, with a supportive community, and sharing experiences, challenges, and success stories can help us stay motivated and inspired. Celebrating small wins can encourage others to join the cause as well, and keeping long term vision and goals in mind, as we all know that progress may take time, but let's not forget to remind ourselves that we have the bigger picture and the importance of taking actions in creating a sustainable future for more generations to come. And all we need to do is to learn, initiate, engage, educate, empower, stay informed, uh, connected. And these efforts, even if they may seem small, but contribute to the collective movement for a more sustainable and just world for all. And that is how we can stay, I guess, motivated. Thank you. Uh, Great. Thank you, Sarah. Very inspiring words for all our audience, I'm sure. I'm very cognizant that we're running out of time. I think we have another 7 minutes at most. So I want to, the next question that I have for both of you is also something that is, of course, deeply personal to me, and time permitting, I will also weigh in on that in a moment. But जैसा कि आप जानते हो, अभी COP28 समिट जो है हमारे नेबरहुड में यूएई में होने वाला है इन अ कपल ऑफ मंथ्स, 2 or 3 months। और हम जानते हैं कि COP27 में आखिरी 1 or 2 days में जाके उन्होंने लॉस एंड डैमेज फंड अनाउंस किया, लेकिन हमें ये अभी तक पता नहीं है कि लॉस और डैमेज फंड के पैसे कहाँ से आएंगे और किसको जाएंगे, amongst its many other flaws. So, and not to mention that the first ever global stock take will be happening at this upcoming COP28, which is to say कि जो 2015 पेरिस अग्रीमेंट में जो भी कमिटमेंट्स थे उसको रिव्यू करे जाएंगे इस साल एट COP28। सो आई वांटेड टू नो, आप दोनों पर्यावरण पे काफ़ी काम करते हैं, और जैसा कि हम सब जानते हैं आज हम C20 के माध्यम पे बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया इस साल G20 को होस्ट कर रही है। अभी वर्ल्ड लीडर समिट अगले 2-3 हफ्ते में होने वाला है। आपकी क्या आशाएं हैं? व्हाट आर योर होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम the world leaders meeting at G20, and also from the upcoming COP28 conference? Sarah, why don't we start with you? Sure. So, from COP28, I think we can hope for stronger commitments to reduce greenhouse gas emissions, accelerate the transition to renewable energy, and implement sustainable practices across various sectors. With that, we can highlight the importance of nature based solutions, provide meaningful opportunities for youth and civil society organizations to participate and contribute to the negotiations and decision making processes. Coming on to G20, I think India, as the president of the G20, has this opportunity this time to promote and advance climate action on a global scale, by which we can promote, of course, sustainable development goals by highlighting its linkage to climate change, and facilitate global collaboration where India can foster international collaboration and cooperation among G20 members to address climate change. This includes encouraging dialogue, sharing experiences, and facilitating joint initiatives on climate mitigation, adaptation, and technology transfer. With that, Thanks. we can enhance climate finance and investment, and of course, promote renewable energy transition. I guess that's all for the answer. Thank you. Thanks, Sarah. Varsha? मुझे लगता है कि जो भी अपॉर्चुनिटी क्लाइमेट चेंज को लेकर अभी G20 में या फिर COP16 में आने वाली है, उसमें यंग लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि जितने भी हम पॉलिटिकल चीज़ें पॉलिटिकल तरीके से करते हैं, उतना हम अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर सोचेंगे तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी आएंगी और ज़्यादा रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे आएंगे। अभी हम देखते रहते हैं कि न्यूज़पेपर में या
टीवी में, कहीं भी आप देखिए तो सिर्फ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना होता ही नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जनरेशन उसी की तरफ भागती रहती है। लेकिन जो एक्चुअल में चीज़ें होती हैं कि क्लाइमेट को क्या चाहिए, वो किस तरह से बदल रहा है, उसमें कैसे हम बदलाव ला सकते हैं, उसके लिए हम कैसे काम कर सकते हैं, वो किसी को नहीं पड़ी है। सबको सिर्फ अपना दिख रहा है कि हमारी सीट, हमारी गद्दी, हमारा पावर कैसे हमें प्राप्त हो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। I would like to thank our organizers. This panel discussion has been organized by MASH Project Foundation, Save the Children India, and the Canadian High Commission in India as part of a campaign called 28 for 28. And the 28 for 28 campaign aims to empower young people to take action on climate change by highlighting their voices and stories through monthly curated open mic and expression sessions. By creating young role models, we aim to inspire more and more young people to act towards climate change. The ultimate goal is to document these stories in a coffee table book or movie to be presented at the COP28 meeting and to engage stakeholders such as educators, civil society, policymakers, corporations, and media in this conversation. So thank you so much to our small but attentive audience. It was lovely to have all of you here, and it's unfortunate we couldn't have Suhail joining us on the panel, but nonetheless, Sarah and Varsha, thank you. And we'll be in touch, and thank you so much for joining this discussion.